तो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे हम। सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 होगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सेक्शनल टेस्ट नंबर 7, जहाँ पे हम कवर करेंगे यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9। यूनिट 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। ये कौन से पेपर का होगा? ये पेपर 2 का होगा। ये क्या होगा? ये पेपर 2 का हमारे पास यूनिट होगा। ओके, तो दिस इज सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 और पार्ट 1 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन हाउ एथनो नेशनलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। एक्सप्लेन हाउ एथनो नेशनलिज्म explain how ethno nationalism leads to the formation of nation state. Explain how ethno nationalism leads to the formation of nation state. आंसर में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि एथनो नेशनलिज्म होता क्या है। एथनो नेशनलिज्म मतलब कब है? ये कंडीशन है वेयर नेशन आर डिफाइंड बाय शेयर्ड हेरिटेज, या फिर कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन कल्चर होगा, या फिर कॉमन फेथ होगा, या फिर कॉमन एथनिक एंसेस्ट्री होगा। उसको क्या बोलते हैं? एथनो नेशनलिज्म। व्हाट इज एथनो नेशनलिज्म? एथनो नेशनलिज्म इज वेयर nations are defined by a shared heritage, common language, common culture, common faith, and a common ethnic ancestry। so क्या बोलेंगे? एथनो नेशनलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एथनो नेशनलिज्म बोलेंगे। ओके, एंड एथनो नेशनलिज्म इज द आइडिया ऑफ असर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन स्टेट या फिर रिलीजन या फिर प्रोविंस या फिर एथनिसिटी एज सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ अदर, मतलब दूसरों से अलग हैं हम। And subnationalism on the basis of ethnicity is called as ethno-nationalism. सब नेशनलिज्म क्या है? नेशन के अलग अपना इंटरेस्ट। सब नेशनलिज्म इज द आइडिया ऑफ asserting the interest of one's own state या फिर रिलीजन, वन स्टेट, ओन रीजन, प्रोविंस, एथनिसिटी, एज सेपरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अब हम बोलते हैं सब नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी इज व्हाट यू कॉल एथनो नेशनलिज्म। सब नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ethnicity can be called as ethno nationalism. Okay, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि नागालैंड जो हो गया। तो जो नागालैंड है ना, इसमें क्या होता है? ओन फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नागालैंड जो है इट इज़ प्रपोज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर नागा पीपल। ये डिमांड रहा है उनका
So demand for own flag and constitution. Nagalim is a proposed independent country. It is a proposed independent country for Naga peoples. And the secessionist violence decreased after the formation of Nagaland state. मतलब जो अलग होना चाहते हैं वो वायलेंस जो है वो कम हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द नागालैंड स्टेट. द सेसेशनिस्ट मतलब अलग होना. द सेसेशनिस्ट वायलेंस decrease after the formation of Nagaland state, but still some factions of National Socialist Council of Nagaland continue to demand a separate country. Some factions of National Socialist Council of Nagaland, National Socialist Council, National Socialist Council of Nagaland continue to demand a separate country. नागालैंड के बाद असम. असम जो था एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने असम को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम. मतलब इन्होंने बोला कि हमको सेपरेट कंट्री चाहिए. जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, the militant organization that is what we called United Liberation Front of Assam. United Liberation Front of Assam demand a separate country for the indigenous people in Assam. Government of India banned it and labeled it as a terrorist group. Government of India banned it and label it as a terrorist group. Label it as a terrorist group. Military operation against it by Indian Army continue to present. आज भी इंडियन आर्मी इसके खिलाफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रखती है. ठीक है. अगर हम बात करें प्रोफेसर संजीव बरूह की, इन्होंने अपनी किताब इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी में डिफाइन किया कि असम नेशनल इमेजिनेशन इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर असम एंड मदर इंडिया. सो प्रोफेसर संजीव बरूह in his book India Against Itself, Assam and the politics of nationality
defines Assam and the politics of nationality defines Assamese national imagination as a conflict between Mother Assam and Mother India. Mother Assam and Mother India. Okay, and then last में conclude करेंगे by mentioning that Indian nationalism is civic nationalism, है ना? That is, if sovereignty movement based on ethno-nationalism succeed, they may result in the formation of nation state. That is, अब civic nationalism क्या होता है भाई? civic nationalism में टेरिटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है rather than ethnic और religion. Indian nationalism is civic nationalism, है ना? And if सोवेनिटी मतलब यहाँ पे सक्सेसनिस्ट, जो अलग होने की जो इच्छा होती है, इफ सक्सेसनिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन एथनो नेशनलिज्म succeed, they may result in the formation of nation state. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जहाँ पे हमको बात करनी थी अबाउट हाउ एथनो नेशनलिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो है इट इज मैट्रिलिनी एंड इस्लाम. जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड इज मैट्रिलिनी एंड इस्लाम. ये भी 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में हमारे पास 200 वर्ड्स में आंसर देने हैं. सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द रिलीजन एंड सोसाइटी इन दी लाक्षाद्वीप्स. ठीक है, हमसे यहाँ पे मेन बात करनी है अबाउट दी लाक्षाद्वीप्स, दैट इज़ दी लक्षद्वीप आइलैंड्स. एक किताब है भाई लीला दुबे का, दैट इज़ किताब का नाम क्या है? मैट्रिलिनी एंड इस्लाम. मैट्रिलिनी एंड इस्लाम एक किताब है जो किसने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ है, टाइटल क्या है इस किताब का? मैट्रिलिनी एंड इस्लाम, रिलीजन एंड सोसाइटी इन लक्षद्वीप. The Lakshadweeps. Okay, was a study by Leela Dubey with the assistance of Abdul Rahman Putti. ओके, ये तो हमारे पास स्टडी है. एंड हर स्पेसिफिक सेंट्रल प्रॉब्लम इन काल्पेनी इज हाउ द मैट्रिलिनी एंड पैट्रियार्कल रीजन इस्लाम इन्फ्लुएंस ईच अदर, है ना? वो उसकी स्टडी जो थी, लीला दुबे जी की स्टडी जो थी, इट इज़ सेंटर्ड अराउंड दी कैसे मैट्रिलिनी और पैट्रियार्कल रिलीजन कैसे आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. जो फैमिली इन कैल्पनी इज नोन एज तारावाड़ and the closest kinship ties are between the mother and her children. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पॉइंट वाइज लिखते हैं इसको.
her specific central problem in Kalpeni is how the matrilineal and a patriarchal religion, Islam, influence each other. Okay. And her family in Kalpani is known as Tarawad, and the closest kinship ties are between the mother and the children. ठीक है, ये पता होना चाहिए. And the oldest woman in the Tarawad enjoys special status, although a male member of the matrilineal group is usually the head of the household. The oldest woman, जो तारावाड़ जो था ना हमारे पास, और कहाँ था भाई, काली कट्टू कलियाना वाला में. ओके, दैट इज नंबूदरी वाला जो एग्जाम्पल था उसमें. ठीक है, बट यहाँ भी वही है क्योंकि केरला से थोड़ा आसपास है इसलिए. ओल्डेस्ट वुमेन इन अ तारावाड़ enjoys special status, although a male member of matrilineal group is usually the head of the household. Okay, and the father in Kalpani does not have an important role in the children's life, even when he does not live with them. There is a strong affective tie, and he is expected to pay the cost of his children's entry into life as well as some life crisis ceremonies. ये सब चीज़ें हैं. ठीक है, जो पर्दा है, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ वुमेन इज एब्सेंट इन कैल्पनी, जो इस्लाम में होता है ना वो नहीं है पर्दा. दैट इज पर्दा इज एब्सेंट इन कैल्पनी. एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे मैट्रिलिनी के लिए कि जो मैट्रिलिनियल रूल्स है ना, मैट्रिलिनियल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इट कवर्स द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड हो गया. ओके, मैट्रिलिनियल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस govern the really important प्रॉपर्टी. इसके बाद यहाँ पे पर्दा, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ वुमेन इज एब्सेंट इन कैल्पनी as it is inconsistent with the matrilineal system, as it is inconsistent with a matrilineal society. Polygamy जो है is permitted in Islam under specific circumstances, although not always under civil law, but is almost entirely missing in Kalpeni. पॉलीगानी जो कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रिवेलेंट है, यहाँ पे ला के बराबर देखने को मिलता है. सो पॉलीगानी इज परमिटेड इन इस्लाम अंडर स्पेसिफिक circumstances, although not always under
civil law but is almost entirely missing in कैल्पेनी। ये लिचा देवी के अंदर एक जगह है। ओके, एंड शी नोट दैट मैरिजेस इन कैल्पेनी आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, मतलब इजी डिवोर्स इज अवेलेबल ओनली टू हाफ द मुस्लिम पॉपुलेशन द मैन। इन मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज डिवोर्स इज स्टिल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू इनिशिएट, but in Kalpani both men and women can use informal convection to initiate divorce। है ना, जो तलाक 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 बोलने से डिवोर्स हो जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे है ना इजी डिवोर्स है भाई। बोथ men and women can use informal convection to initiate divorce। thus हमने देखा, इन्होंने बोला कि मैट्रिलिनी और इस्लाम में कौन जीता, दुबे ने सजेस्ट किया। दुबे ऑब्जर्वेशन में क्या समझ आता है, ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट दैट मैट्रिलिनी जीत गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्कस द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट आइसोलेशन एंड एसिमिलेशन, डिबेट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन। डिस्कस द criticism against isolation and assimilation, debate on tribal population। ओके, एंड आंसर लिखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये जो है ना आइसोलेशन और एसिमिलेशन का जो अप्रोच था, एल्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था आइसोलेशन का, एंड जीएस गुरे ने दिया था एसिमिलेशन का। ठीक है, सो जीएस गुरे आर्ग्यूड दैट द ट्राइब्स और ट्राइबल्स are a part of Hindu society, they would be considered as backward caste Hindus, an approach known as assimilation। तो गुरे ने क्या कहा, ट्राइब्स को बैकवर्ड कास्ट हिंदूज कहा। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एसिमिलेशन का दिया था, एंड ही कॉन्टेस्टेड द एल्विन्स थ्योरी ऑफ पब्लिक पार्क और आइसोलेशन। इन्होंने अपोजिट में बोला कि नहीं देखो, जो एल्विन का है वो उसका थ्योरी ठीक नहीं है, मेरा थ्योरी ठीक है। एंड ही कंटेस्टेड द थ्योरी, द एल्विन्स थ्योरी, जो वॉरियर एल्विन थे उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पब्लिक पार्क या फिर थ्योरी ऑफ आइसोलेशन। ओके, and soon after Alvin's book The Loss of Nerves, he came out with his own book The Aboriginals, so called, and their future in 1943, a rejoinder to Alvin's। He said that the problem of tribals are not specific to tribal only, and they are problems of the backward caste peasants। Soon after the Alvin's book Loss of Nerve, he
came out with his own book, The Aboriginals. The Aboriginals, so called, and their future in 1943. A rejoinder to Alvin. He says that the problems of tribals are not specific to tribals only. They are problems of backward caste peasants. ओके है ना। तो देयर वॉज क्रिटिसिज्म बोथ आइसोलेशन एंड एसिमिलेशन। यहाँ पे एक और लाइन लिख लेते हैं कि इन 1940s warrior Alvin in his philosophy of NEFA, in his philosophy of NEFA, argued that the tribals should be persuaded to change, उनको अपने हिसाब से चेंज होने देना चाहिए, बट नॉट इम्पोजिशन ऑफ नॉन ट्राइबल लाइफ, बट नॉट इम्पोजिशन ऑफ नॉन ट्राइबल लाइफ। जो नॉन ट्राइबल लाइफ है उसका इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए, एंड should be made on them. The imposition should not be made on them. ठीक है। So there was criticism of both the isolation and the assimilation as the two extreme, है ना, दोनों criticism थे। There are criticism on both isolation and assimilation as two extreme approach। तो एक बीच का अप्रोच किसने बताया भाई? डीएन मजूमदार ने बताया कि हमको सेलेक्टिव इंटीग्रेशन करना चाहिए। एक स्केल के बेसिस में हमारे पास टाइप किसके करीब है, एसिमिलेशनिस्ट के करीब है कि आइसोलेशनिस्ट के करीब है, उसको पता करना चाहिए। जैसे कि डीएन मजूमदार ने क्या बोला, डीएन Majumdar talked about selective integration for the tribals. He suggested that the tribals should not be exposed to or their area made open for all aspect of non-tribal life, but some of good and beneficial item of civilization should be introduced in there, है ना। सारे के सारे एस्पेक्ट उनके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, बट कुछ, ओके, बट सम गुड एंड बेनिफिशियल आइटम्स ऑफ civilization should be
introduced in their life. Okay, then conclude करेंगे by mentioning that the national travel policy is integrationist, abandoning the two extreme approach of the isolation and assimilation. यहाँ बात करेंगे अबाउट द पंचशील, दो द पॉलिसी ऑफ पंचशील initiated by Pandit Nehru on tribal development in consultation with Warrior Elvin, highlight the इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच को ये हाईलाइट कर रहा है. ओके, उसके बाद जैसे इस पंचशील में क्या क्या आता है भाई, ट्राइबल पंचशील में यह आता है कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन जीनियस, जैसा वो चाहते हैं उनको उससे डेवलप करने देना चाहिए. एंड सेकेंड क्या है कि ट्राइबल राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टिव, जो उनका राइट्स है लैंड और फॉरेस्ट में उसको रेस्पेक्ट करना है. तीसरा, ट्राइबल टीम शुड बी ट्रेंड इनटू अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट विदाउट टू मैनी आउटसाइडर्स, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको ही ट्रेन करना चाहिए कि आपस में वो एडमिनिस्ट्रेशन को एंड डेवलपमेंट को कर पाएँ किसी बाहरी आदमी की मदद के बिना. एंड ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन विदाउट डिस्टर्बिंग ट्राइबल सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, ट्राइबल डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए भाई हमारे पास बिना कोई, मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट ऐसे करो कि उनका सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन चेंज ना हो, ख़त्म ना हो. एंड द इंडेक्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी फिफ्थ क्या है कि जो इंडेक्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट द मनी स्पेंड. ठीक है ना, हमारे पास जो मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट कितना हुआ है इसको हमको इसको देख के नहीं सोचना है कि कितना ट्राइबल के ऊपर खर्चा हुआ, हमको ये देखना है कि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कितना अच्छा हुआ. ओके, सो ये ट्राइबल पंचशील है. लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द नेशनल ट्राइबल पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर वो कैसा है भाई, द नेशनल ट्राइबल पॉलिसी जो है नेशनल ट्राइबल पॉलिसी इज इंटीग्रेशनिस्ट, abandoning the two extreme approach, abandoning the two extreme approaches of isolation and assimilation. Okay, now next question क्या है, compare the approach adopted toward tribal communities during colonial and post independence period. क्वेश्चन नंबर 4 है, compare the approach adopted toward tribal communities during colonial and post independence periods. सो स्टार्ट करते हैं भाई. यहाँ पे दो डिफरेंट अप्रोच थे ड्यूरिंग दी कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. तो देखते हैं दी अप्रोच. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है टूवर्ड ट्राइब्स चेंज considerably after independence during colonial
पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में कैसा था भाई, दी कॉलोनियल मार्क द एंड ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, क्योंकि कॉलोनियल्स को जो अंग्रेज थे वो आइसोलेशनिस्ट को आइसोलेशन फॉलो करते थे, ट्राइब को छोड़ दो जैसे वो है ऐसे सोचते थे वो। सो उसके बाद हमारे पास चेंज आया, द कॉलोनियल पीरियड मार्क्ड द एंड ऑफ relative isolation of Indian tribes, okay। एंड जो colonial economic policy था of treating forest as a commodity as a source of revenue generation criminalized the livelihood strategies of tribals। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड क्या था, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में क्या था भाई, वो फॉरेस्ट को ट्रीट करते थे एज ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। colonial economic policy of treating forest as a commodity and a source of revenue generation, it criminalized the livelihood strategies of tribals। ओके एंड इस समय क्या था, ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी प्रोग्रेसिवली डिप्राइव्ड द ट्राइबल्स ऑफ द ट्रेडिशनल राइट्स ऑन फॉरेस्ट। ओके allowing the non-tribals into the tribal areas led to their exploitation by Hindu landlords through indebtedness and बॉन्डेड लेबर। क्रिश्चियन जो थे उन्होंने उनकी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन को हटाने में बहुत मतलब हटाने की बहुत कोशिश की और कुछ कुछ शामिल भी हुए। सो क्रिश्चियनाइजेशन मेड देम फॉरगो देयर primitive forms of religion। ये तो हो गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस after independence the forest policy became more favorable to tribals। the forest policy became more favorable to tribals। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 था, दे ग्रांटेड देम सम राइट्स।
Forest Right Act 2006, Land Acquisition Act 2013 granted them some rights. ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 5th शेड्यूल एरियाज बनाए गए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए इन दी 6th शेड्यूल एरियाज दैट ग्रांटेड देम ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस. पेयराइज इन 5th शेड्यूल एरियाज एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन 6th शेड्यूल में हमारे पास कौन आता है? ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय. ओके, दिस इज शेड्यूल एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स granted them autonomy and self governance. ओके, एंड जो था अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग ट्राइबल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बाय स्ट्रेटजीज लाइक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की. अप्रोच ऑफ इंक्लूडिंग ट्राइबल्स इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बाय स्ट्रेटजीज लाइक joint forest management. लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशन दैट नेहरूवियन पंचशील एंड इंटीग्रेशन एज अ अप्रोच. जो नेहरूवियन पंचशील जो है वो बात किसी करते हैं, वो बात करते हैं बहुत इंटीग्रेशन, सेलेक्टिव इंटीग्रेशन बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन. ये कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि नेहरूवियन पंचशील एंड इंटीग्रेशन एज एन अप्रोच became guiding principles for tribal administration. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? राइट अ नोट ऑन PVTGs. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. राइट अ नोट ऑन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG. ओके, particularly vulnerable tribal groups. okay सो सबसे पहले तो PVTGs को क्लासीफाई किसने किया भाई? PVTGs क्लासीफाइड अंडर द देवर कमीशन, जो कि 1960-61 में बना था, है ना. सो एज टू बेटर फैसिलिटेट द ग्रोथ एज पर द अदर एसटीज ऑन नेशनल स्केल. PVTG were classified under the Weber Commission in 1960-1961 so as to better facilitate their growth on par with other STs on national scale and help them include in the mainstream development and help them
include in the mainstream development while using their indigenous knowledge. While using their indigenous knowledge. Okay, and there are 75 identified PBTGs among scheduled tribes in 18 union territories and states of अंडमान है ना, मतलब 18 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार में 75 आइडेंटिफाइड PBTGs हैं. There are 75 identified PBTGs among scheduled tribes in 18 states and union territories of Andaman and Nicobar Island. जो क्राइटेरिया फॉलो किया था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ PBTGs क्या है भाई? द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ PBTGs आर एस. पहला तो क्या है? प्री एग्रीरियन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग population, extremely low literacy or a subsistence level of economy, a subsistence मतलब जिन चीज़ों को चलाने के लिए a subsistence level of economy. These are the 4 criterias: pre-agriculture level of technology, stagnant or declining population, low literacy, subsistence level of economy. एंड जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लिए हैं है ना, कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट स्कीम जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इम्प्लीमेंट किया था, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर PBTGs एंड इट इज़ 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड. कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट स्कीम, the Ministry of Tribal Affairs is implementing this scheme exclusively for PBTGs. It is 100% central sector scheme. एंड इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? है ना, स्कीम फॉलो द स्ट्रेटेजी अप्रोच ऑफ वन बंधु कल्याण योजना, विच नीड
which is need based and strives to optimize utilization of resource available under the various program and aimed at specific outcome. के एम एंड ऑब्जेक्टिव में लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट्स रहेगा द स्कीम follows the strategic approach of one बंधु कल्याण योजना, वन बंधु कल्याण योजना, which is need based and strives to optimize utilization of resource available under various programs. It is need based and strive to optimize utilization. ओके इनका क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, इनका डिक्लाइन हो रहा है भाई, इनका पॉपुलेशन. ओके 5 of the PVTGs in Andaman such as the Andamanis, Great Andamanis, Javaras, Onjis, Sentinels and Shompens, इनका पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग कर रहा है. So immediate step and conservation steps, intermediate conservation steps are needed to curb the declining population, especially the 5 PVTGs in the Andaman Islands. Okay, so last में conclude कर रहे हैं immediate steps and conservation is needed to stop to address the issue of declining population of PVTGs, especially the 5 PVTGs of Andaman Islands, such as Great Andamanis, Great Andamanis, Jarawas, Onjis, Sentinels and Shompens. तो ये पार्ट 1 होंगे जहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन देखे. नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे.